Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about the upcoming G7 summit, which is going to happen next week. I hope you all are aware. So that is why actually, or I would say this weekend, we'll be having G7 summit. So that is why regarding the upcoming G7 summit, which we are going to discuss. We will discuss in detail about the history of G7 also. And there were some news reports that were saying that PM Modi will not attend it. However, later on, he himself clarified that yes, he will be attending. So we'll discuss that also. Okay. I think I'm audible, visible. Is everything fine? So generally, this class happens at 3 p.m. But we are running a boot camp session on paid classes, and that is why at let's say okay. Otherwise, it generally will happen at 3 p.m. only. Okay. So let us begin. Is my voice reaching? Is everything fine? Is the slide visible? Is the voice clear? If yes, then please write yes. Let us begin with the first thing. Yes, fine. Thank you. This year, the G7 summit is going to happen where? Germany, UK, Canada, Japan. कहाँ होने जा रहा है? देखो अगर आप PYQ उठा के देखोगे CLAT का, so I think 2 years back they had asked on G20 when India hosted. Last year they had asked on BRICS. Okay, so they do ask questions on international grouping. Okay, the international grouping is important. Please do not think ये important नहीं होता है. International groupings are very important for the exam. I'm expecting everyone to answer. Why there is only one answer? Paper, you have to click on e-paper website of the Hindu, and you have to pay a small amount. I mean, there's a subscription for that, through which you can get the link, the PDF e-paper. Okay. There, the right answer is option C. Canada is hosting the G7 Summit 2025. Okay. Someone is asking about the Hindu newspaper link. So thehindu.com पे जाना, ठीक है? वहाँ पे टॉप में लेफ्ट ई पेपर लिखा होगा, उस पे क्लिक करना. You have to pay a certain amount. वो 2 months, 3 months का सब्सक्रिप्शन होता है, and then you can get the access to the e-paper. Okay. So G7 Summit 2025 is happening in Canada. So option C is the right answer. So G7 Summit 2025 would be which summit? 46th G7 Summit, 51st G7 Summit, G7 Summit. What is the right answer? क्या सही जवाब? Yes, Maitri, you can ask what is the confusion. आप पूछो. Yes, the right answer is yes, Kushagra, right? 51st G7 Summit is actually happening in Canada this year. ठीक है? So B is the right answer. देखो कब हो रहा है ना? Kananaskis, Alberta in Canada. तो कनाडा में एक स्टेट है अल्बर्टा. अल्बर्टा is a province. Province कह लो या स्टेट कह लो. ठीक है? वहाँ there is a city. That city is called as Kananaskis. ठीक है, यही हो रहा है G20 summit. In fact, 28th G7 उस टाइम पे G8 summit कहलाता था, वो भी यही हुआ था many years back. Static GK में क्या क्या पढ़ना है? Currently you should read modern Indian history. अभी आपके पास टाइम है, ये पढ़ो. And go to our on our YouTube channel playlist में जाना. We have made a separate playlist for modern Indian history. Especially जो गांधी जी के बाद है, गांधी जी सत्याग्रह, and below it all the videos, please go and watch it. Why I'm saying? Because we have seen previous question on modern Indian history in recent years. ठीक है? तो कम से कम वो तो आप जाके देख लो स्टैटिक जीके का. Start from there.
आई एम एड्रेसिंग टू यू मैत्री, ठीक है ना, आप देख लेना वो, and our the same YouTube channel on which you are watching this video, you can get that. Fair. So we are talking about the G7 upcoming G7 summit. The next week we are having a G7 summit. So here is India, this is US, this is Canada, ठीक है। तो कनाडा में ये वाला जो स्टेट है ना, इस स्टेट को कहते हैं, ए भी लिखा है ना, अल्बर्टा स्टेट। एंड इस अल्बर्टा में एक जगह है Kananaskis, where the G7 summit is happening. This is the name of the city, Kananaskis. ये यहाँ पर Kananaskis, where this G7 summit is happening. Is there no video option for Hindu analysis? No, we are not conducting. I think Sunday को the Hindu analysis नहीं होता है ना, but normal days is there. I think. The next one is, who among the following is the host of this year's G7 summit? Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Keir Starmer, none of the above. Video option for Hindu analysis. Kushagra is saying none of the above. Why? What is the answer then? If someone is saying option D, you have to tell me the answer. It's Mark Carney. Yes, Kushagra, very good. Host of G7 summit, कुछ लोग सोचेंगे Justin Trudeau होगा, but he has resigned as the Canada's minister, prime minister. He has resigned, and now we are having a new prime minister. His name is Mark Carney. He is the right answer. I hope you are aware. He has appointed a foreign minister of an Indian origin lady. What is her name? Indian origin की, उनका नाम बताइए। बताइए, please tell me. The foreign minister of Canada is an Indian origin lady. Yes, Kushagra right. Anita Anand. Yes, Kushagra right. Very good. The next is, since we are talking about G7, this is the question that comes to our mind, that G7 consists of what? 7 countries and 1 regional grouping, 6 countries and 1 regional grouping, 5 countries and 2 regional grouping. Answer the A, B, C, D में बताओ, what is the answer? I'm yet to get a right answer, so I'm waiting for it. कोई सही जवाब बता दे. I am waiting for the right answer. Still, I'm yet to get a right answer. अभी भी हमको सही जवाब नहीं मिला है. Some people were saying option A, ये भी गलत है. Some people were saying option C, ये भी गलत है. Yes, B is the answer. 7 countries plus 1 regional grouping. तो ये कौन सा regional grouping है? Which is this regional grouping? Which regional grouping is this? जो 1 रीजनल ग्रुपिंग लिखा है, कौन से ग्रुपिंग है, इसका नाम बताइए. नो आइडिया? ओह माय गॉड, दिस इज वेरी इजी. अब गेस भी कर लोगे तो भी. रीजनल ग्रुपिंग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कंट्री. अमेरिकन कैसे? यूरोपियन यूनियन. यस स्फूर्ति, वेरी गुड. यूरोपियन यूनियन. European Union, 7 countries and European Union. This is G20 comprises of 19 countries plus European Union plus African Union. ये 2023 में हुआ था African Union. Similarly, G7 countries comprises of 7 countries plus European Union. Please remember it. This is very important. European Union अक्सर होता है, so B is the right answer. Now, the next one is, why I'm saying, because G7 is in the news and we have seen previously questions on G20 and BRICS. So international grouping से questions आते हैं.
So of course, this is very important. The next is, which of the following is not a member of G7? बताओ. France, South Korea, Germany, Italy. हाँ, ये तो आप लोग बता दिया आराम से. Yes, South Korea. B is the right answer. Good. The others are member of G7. अब ये वाला बताओ. The next question. Read the question carefully. So question में क्या लिखा? Which of the following is not a member of G7? Yes, very good. So Russia is not a member of G7. D is the right answer to this question. Yes, people are writing G8 में था. हाँ, good. We'll discuss further about this. ठीक है? In this class, D is the right answer. Very good. People have answered me. Veer, Kushagra, Niharika, you are right. Sub, you are also right. है ना? So these are the 7 countries. अगर आप गौर से देखोगे, if you see it carefully. So I was saying na ki 7 countries and entire European Union is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 countries plus European Union. Okay. So these are the 7 countries plus entire one regional grouping. In दोनों European Council की president है, ये European Commission की president. ठीक है. That is what you should know. And this is president, the Prime Minister of Canada, है ना. And these are the other members, है ना. Yeah, that's so. Total 7 members. Okay, France, Germany, Italy, Japan, UK, US, and European Union. Now, how to remember these 7 countries? कैसे याद करना होता है? Can you tell me the trick? The trick is this: A, B, C, D, E, F, G, J. ठीक है. अब बताओ ये क्या बता रहे हो सर? ABCD पढ़ा रहे हो हमको. You're teaching us ABCD, but I'll tell you the trick to remember. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, which of the following is a member, which of the following is not a member. ठीक है, तो ये हो गया अमेरिका, ये हो गया ब्रिटेन, ये हो गया कनाडा, इसको काट दो, इसको काट दो, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मनी, इसको काट दो, ये हो गया इटली, ये हो गया जापान. कितना हुआ देखो? 3 2 5 2 7. So 7 countries. These are G7 plus European Union. ठीक है, याद रहेगा. Now I hope you remember. Why I'm saying, because they ask questions. ऐसा क्वेश्चन आता है कि which of the following is a member of this, है ना. तो remember it. This will be helpful for you. हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर ई को नहीं काटा, ई को यूरोपियन यूनियन लिख सकते हो. ठीक है, दैट ऑल्सो यू कैन अप्लाई द लॉजिक. ठीक है, ये भी कर सकते हो. बट मैंने उसको इसलिए काट दिया कि मैंने ये कहा कि ये सारी कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन जो है, जो रीजनल ग्रुपिंग है, तो उसको सेपरेटली में. The others are actually countries. So try to remember it. This would be very very helpful in the exam. तो ये आपके सामने है सारे लीडर्स. ये these 2 are actually representing European Union and other top 7 are actually representing their countries. These are the leaders of their country, है ना. आप देख सकते हो, है ना. तो यूके जैसे प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प है, जापान के शिगेरो इशिबा है, इटली की जॉर्जिया मेलोनी इज देयर, German Chancellor Friedrich Merz is there, France President Emmanuel Macron, and Canada's Prime Minister Mark Carney is there. Operation Sindoor पे आकाश, I have made 2 videos. वो Operation Sindoor thumbnail में नहीं लिखा है, but I have made 1 video on INS Vikrant. आप लाइव सेक्शन में जाना, you will get it. And another video जिसके thumbnail पे लिखा होगा S-400 Rafale jet, light blue कलर का thumbnail. These 2 are actually related with Operation Sindoor. Go to the live section of our YouTube channel. वो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे मिल जाएगा. INS विक्रांत पर एक वीडियो S-400 राफेल करके थंबनेल पे लिखा होगा. ठीक है. So other invitees, these are the not the members, not G7 members.
but they are invited. ठीक है, invitees मतलब कि they are not the members of G7. So basically, India is not a member of G7. Please be careful. We are not a member of G7, but India is a member of G20. ये ध्यान रखना जरूरी है. India is not a member of G7, but member of G20. Please remember it. ठीक है. So Australia में Anthony Albanese prime minister, ब्राजील के लूला डी सिल्वा है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है पीएम मोदी इज आल्सो इनवाइटेड, है ना, आप देख सकते हो. तो ये याद रखना, बाकी सब नहीं. अच्छा, अब एक चीज और गौर करना. See this one, the last one. He is invited in almost all the important summits which are led by Western countries. G7, G20 जितने भी इस तरह के कंट्रीज होते हैं, जितने भी ग्रुपिंग होता है, सब में इनको इनवाइट किया जाता है, स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है. So the Western world is actually they are supporting Ukraine. So Vladimir Zelensky is invited everywhere in G7, G20 or whatever, all the international summits where the Western are heading. No, China is not a part of G7, no. Okay, so invited leaders are PM Modi is there, same important ones, and Vladimir Zelensky from Ukraine. Why? Because G7 कहते ये है कि we are actually part of developing countries, democratic countries, etc. It's a grouping of democratic countries and developed countries, not developing, sorry. Developed democratic countries, etc. है ना. देखो ये आर्टिकल आई थी, देखो एक्चुअली 2 days back this was coming in the news, 2-3-4 days back actually, कि PM Modi unlikely to attend G7 summit in a first in 6 year. अगले 6 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है that PM Modi will not attend G7 summit. So the G7 summit is supposed to happen in 15-17 June in Canada. But later on, first thaw in a chill. First thaw in a chill क्यों लिखा है? Because actually a few years back we had seen some frictional relationship with Canada. India और Canada में थोड़ा सा friction हो गया था diplomatically. We had expelled each other's diplomat also. This also I will discuss a little bit. ठीक है. तो उसके बाद ये सब न्यूज आ रही थी कि maybe PM Modi might not be invited. But अभी न्यूज आई वो ये है कि now it's the clear that he has been invited. तो देखो, अगर आप उनका ट्वीट भी देखोगे, glad to receive a call from Prime Minister Mark Carney of Canada, congratulated him on recent election victory and thanked him for the invitation of G7 summit at Kanaskas later this month. ठीक है. And as vibrant democracies, हाँ, तो जनरली क्या होता है G7 में ये बताते हैं कि जो है this is part meant for democratic countries, ठीक है ना. Bound by deep people-to-people ties, India Canada will work together with Viger. Viger मतलब क्या होता है? एनर्जी के साथ, है ना, with mutual respect, है ना, shared interests, etc. ठीक है. So this is what you should know. So this is the current, according to the current news, PM Modi will go to the G7 summit in Canada. ठीक है. है ना. देखो renewed Viger लिखा ना, renewed Viger मतलब full energy, renewed मतलब दोबारा, restart, Viger मतलब energy, full energy के साथ, है ना. अब देखो ये सुहासिनी यादव की आर्टिकल है ना, द हिंदू में. तो उन्होंने लिखा कि विजिट टू कनाडा आफ्टर अ डिकेड मार्ड बाय टेंशंस ओवर खालिस्तान इशू डिप्लोमेटिक एक्सपल्शन. सो ऑलमोस्ट 10 साल बाद जा रहे हैं मोदी जी, और recent years में almost after 10 years he is going, and in recent years we have seen frictions between India and Canada on the issue of Khalistan and diplomatic expulsions. Means foreign officers of both the countries actually expelled each other, है ना. Actually हुआ क्या था कि हरदीप सिंह निज्जर was a Khalistani, he was killed in Canada and the Canadian government blamed Indian government for this. So that is why after that we had seen frictions. तो उसके बाद क्या हुआ था कि कनाडा ने एक्सपेल कर दिया एम्बेसडर को, संजय कुमार वर्मा, इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा. Okay, please write in the comment why are we writing high commissioner and not ambassadors. ये बताओ कमेंट में. इसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया also we actually both expelled each other. So India also expelled the diplomat of Canada. So you have to tell me what happened, why it is called as high commissioner and not ambassador. मैंने बताया है. Please tell me. Why do we use the word high commissioner instead of ambassador? I have told you time and again, बहुत बार बताया मैंने. I think paid sessions में मैंने बताया है ना, because Commonwealth nations, we both are member of this. So when both are member with India and Canada, since both are member of Commonwealth nations, so exchange of embassy, we exchange high commission
and the officers are called as high commissioners instead of ambassador. Okay, that is what you should be knowing. So Canada had expelled 6 Indian diplomats and consular officials. Okay, India had earlier also ordered expulsion of 6 Canadian officials. तो ये कब की न्यूज़ है? 30th October 2024. मतलब ये हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स को हटा दिया था, मतलब वापस जाने को कहा था. They were expelled. Envoy वही होता है, ambassadors को envoy, high commissioners, ambassadors. So they were asked to go back by both the countries. So थोड़ा सा frictions हो गया था at that time. We had some friction with Canada during that event, है ना? तो So Canada ने actually allegation लगा दिया था कि Indians were responsible, Indian government was responsible for the killing of the Sikh Khalistani Hardeep Singh Singer, the Khalistani leader, etc. So that's why it was in the news. एक चीज, दूसरी चीज देखो इनके आर्टिकल में, there is one more thing being mentioned. This is 40 years of the Kanishka flight incident of 1985. Do you know this? Anyone? ये क्या था? Anyone know? Because it is also in the news. देखो हाँ, ये तो मैंने बता दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस पर है, कॉमनवेल्थ नेशंस एक्सचेंज हाई कमिश्नर्स. देखो एयर इंडिया फ्लाइट 182 इसको कहते हैं कनिष्का बॉम्बिंग जो बता रहे हैं ना, उसमें 1985 में एक फ्लाइट थी. इट वाज गोइंग फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू लंदन टू दिल्ली टू मुंबई. मतलब वो ऐसे जा रही थी कनाडा में. दिस इज मॉन्ट्रियल. सो मॉन्ट्रियल से इट वाज गोइंग टू लंदन. ठीक है, ये वाला लंदन हो गया. सो लंदन से इट वाज गोइंग टू दिल्ली. प्लान ये था, मतलब ऐसे इसका रूट था. एंड दिल्ली से इट वाज सपोज्ड टू गो टू मुंबई. So somewhere here Mumbai हो गया. So what happened was when it was going from Montreal to London, इस रास्ते में यहीं पर somewhere in the mid of Atlantic Ocean, ये Atlantic Ocean है ना, somewhere here actually aeroplane blasted and all the people died. We are talking about 1985. Okay, this is called as Air India Flight 1982, and it is said that it was planted by the Khalistanis. That is what it was said. So this is what you should be knowing about Air India Flight 182. ठीक है, तो इसमें वही लिखा, मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन से पालम, मतलब दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली थी, मुंबई. ठीक है. So that is what it is writing. The author is writing. She is writing. लिखा भी है कि this is 40 years since the bombing of Air India flight, Kanishka flight कहते हैं, 23rd June 1985. So if you add 40 years, it will become 23rd June 2025. और G7 कब हो रहा है? I think 15th June के आसपास हो रहा है. So it is almost near to the 40 years, है ना? That is what you should be knowing about. ठीक है, so ये याद रखिएगा थोड़ा सा फ्लाइट के बारे में, इंडिया का फ्लाइट, है ना? So G7, let's talk about this. Kananaskis is the place in Canada where we'll be having this year's G7 51st summit. ठीक है, तो अभी देखो जो समिट होगी 15 से 17 जून होगा. You can see it here. 15 से 17 जून we'll be having summit in Kananaskis. इससे पहले जो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, है ना, और एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की. ठीक है, we had seen that also happened in Canada but not in the same city. ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी मार्च में, उसमें जैसे क्या क्या बात हुई थी. So what was the discussion? First is again they are talking about Russia-Ukraine war, trying to bring long-term prosperity, security, मतलब of Ukraine. Then regional and peace stability in Middle East. Middle East किसको कहते हैं भाई? West Asia. इसको कहते हैं this, and this is South Asia. We are in South Asia. This is called as West Asia or Middle East. ठीक है, इसको वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट कहेंगे. ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, इसमें बहुत सारी इंस्टेबिलिटी, जैसे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग, है ना. सीरिया में देयर आर इंस्टेबिलिटी. यमन में देयर इज सिविल वॉर. आई होप यू आर अवेयर, है ना. सो इसी बता रहे पीस स्टेबिलिटी. एंड फिर एक और क्या बता दो भाई, इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी इन हैती एंड वेनेजुला. अच्छा, हैती और वेनेजुला दिखाता हूँ. दिस इज इंडिया, दिस इज कोलंबिया, ये वेनेजुला है. आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी क्राइसिस चल रही है. एक तो यहाँ का ड्रग्स network है, that is also there. The next is economic crisis is there.
ठीक है, a lot of conflicts do happen यहाँ पर. Venezuela is also witnessing this. हेती यहाँ पर पड़ता है. आपको पता है हेती में 2-3 years back the head of the state was killed, है ना, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट माने गए थे. हेती is also witnessing some sort of instability. ओके, तो ये इनकी बात हो रही कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो. देन स्टेबिलिटी इन सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. अच्छा, आपको पता है, आई होप यू आर अवेयर, सूडान में सिविल वॉर इज हैपनिंग. आई हैव डिस्कस्ड दिस again and again earlier also. On one side is rapid support forces. It's like a paramilitary force versus actually army of Sudan. So there's a conflict between RSF and army in Sudan. Similarly, Democratic Republic of Congo is this, DRC. इसमें क्या है, यहाँ पे बगल में एक रवांडा कंट्री है. बेस्ड रेबल्स, M23 रेबल्स इसको कहते हैं. These are actually attacking Democratic Republic of Congo. तो वहां भी स्टेबिलिटी की बात हुई. ठीक है, so these are the things being talked about. M23 rebels. Then talking about countering hybrid warfare, sabotage. अब जो थी जंग जो थी सिर्फ वेपन से नहीं होती. I hope you are aware. साइबर अटैक्स है ना, बहुत डिफरेंट तरह के वॉरफेयर होते हैं, है ना. क्रिप्टो करेंसी से भी अटैक हो सकता है एंड मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. M23 साउंड्स लाइक अ वेपन. नहीं, वो एक्चुअली वेपन नहीं है. M23 ने मार्च 2023 को कुछ इवेंट हुआ था, उससे रिलेटेड लोग M23 नाम लिखते हैं. इट इज समथिंग रिलेटेड विद मार्च 23. ठीक है, ठीक है. सो अब देख सकते हो and 15th to 17th June 2025 we'll be having Canada will be hosting this, है ना, G7 summit. Okay, where is the secretariat of G7? बताओ. Yes, Krishi Sachdeva and Kushagra, you both are right. No permanent secretariat. G7, G20 सबका secretariat वगैरह नहीं होता है. Yes, Purti, सब you are right. Kushagra, these are the right answer. ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है. तो बोले थे देख सर चाइना क्यों नहीं, आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी. चाइना इसमें नहीं आएगा ना, तो जनरली नहीं होता. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एटसेट्रा. ठीक है, इसलिए they are generally claiming themselves कि we are liberal democracy etc. IMF major advanced economies. ठीक है, one of the following led to the establishment of G7. Which treaty? If you are saying D, then please tell me, explain it. Why? Which treaty or what? Why are you saying D? Yes, Krishi says they were right. The right answer is D. ये दोनों तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है और भी, है ना. D is the right answer. It is not based on any treaty. No. Answer is D. ठीक है. Yes, Kushagra right. ठीक है, so ये पता होना चाहिए. D is the right answer. No treaty. Not based on any treaty. Which of the following event led to the formation of G7? कौन सा इवेंट हुआ था? देखो जब G7 समिट हो जाएगा ना नेक्स्ट वीक, मोस्ट लाइकली आई विल शेड्यूल वन मोर क्लास. अभी याद है, you had told me about G7. Okay, Krishi sir, great. Which of the following event led to the formation of G7? कौन सा इवेंट हुआ था? कौन से ईयर्स में, कुछ रफली आइडिया दे सकते हो? Rest the year for its time. Yes, Kushagra, very good. Purti, right. Nixon shock and energy crisis.
1970s के आसपास की बात है। एनर्जी क्राइसिस में हुआ था। व्हाट इज एनर्जी क्राइसिस? 1970s 1973 में एग्जैक्ट हुआ था एनर्जी क्राइसिस। वियतनाम वॉर से इसका रिलेशन नहीं है। एनर्जी क्राइसिस में हुआ था कि सऊदी अरब हैड इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल बाय मेनी टाइम्स, 3, 4, 5 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, ये वाली क्लास देखोगे। where Bretton Woods system was established in 1944 and it was abolished in 1970s. Bretton Woods system को खत्म कर दिया गया था। Bretton Woods institutions are still there and this was done by Nixon shock. तो ये मैंने इस क्लास में बताया है what is Bretton Woods system. ठीक है, so Nixon shock and energy crisis. Energy crisis में हुआ था, I told you that in 1973 के आसपास actually Saudi Arab had increased the oil prices. उसमें कुछ रीजन है इसका। कुछ अरब पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट 1973 का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, अरब पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट सर्च करना, उससे कुछ रिलेशन है इसका। अरब इजराइल वॉर, सॉरी, अरब इजराइल वॉर 1973, इस तरह सर्च करना, यू विल गेट इट। इट हैज सम रिलेशन विद दैट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ अभी है ना, इफ यू रीड विकिपीडिया ऑफ G7, I tell you to read Wikipedia because of course they ask questions from it, है ना। हाँ, यॉम किपुर वॉर तो था, आई थिंक यॉम किपुर इज 1973, राइट। हाँ, उसी के बाद ओके, द नेक्स्ट इज G7 वाज इनिशियली व्हाट। ये भी हमको याद है कि हमने बता रखा है, आई टोल्ड यू। तो कितना सिंपल, कितना कम है क्वेश्चन, बस 3 वर्ड है। G7 was initially and it has become so difficult for you all. इतना छोटा सा आंसर भी, क्वेश्चन भी इतना डिफिकल्ट हो सकता है। ऑप्शन भी कितना छोटा सा है, G6, G8, G9, G4 and still I haven't got the right answer. Very small question, very small options, still becoming very difficult. बताओ क्या होगा आंसर। What is the answer? The answer is, I'm yet to get answer. Please tell me. G6 is the right answer. ठीक है, it was G6 initially. ठीक है, is the right answer. It was called as G6 or library group. हाँ, yes, पहले कुछ लाइब्रेरी ग्रुप करके था, राइट, कृषि सचदेवा। G6 और लाइब्रेरी ग्रुप कहते हैं इसको। The right answer to this question. ठीक है, I'll discuss it. The first G6 summit happened where? Kushagra, nothing will come to that. ठीक है, this might be a new thing for you, but आपको पता होना चाहिए because अभी G7 summit हो रहा है ना। G6 summit कहाँ हुआ था? देखो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद है, तो मोस्ट लाइकली 73 में तो नहीं हुआ, उसके बाद हुआ, या सेम ईयर भी हो सकता है ऐसे। बट व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर, यस कुशाग्र, यू आर राइट, 1975 में हुआ था फर्स्ट G6 समिट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो द फर्स्ट G6 समिट कहां हुआ था? ये इट हैड हैपेंड वेयर? फर्स्ट G6, यस कुशाग्र, ग्रेट। फर्स्ट G6 समिट हैपेंड इन फ्रांस। ठीक है, ये फर्स्ट G6 समिट 1975 फ्रांस, ये प्लेस का नाम है, द फर्स्ट एंड ओनली G6 समिट, है ना। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। G6 became G7, पहले G6 कहलाता था, फिर G7 बन गया। देखो आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड इट, जिसने गौर से देखा होगा बता देगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, द
द फर्स्ट एंड ओनली G6 समिट, यानी इसकी नेक्स्ट ईयर हो गया होगा G7 तभी तो. So the right answer is 1976 is the right answer. Yes, Kushagra, great. देखो ये बहुत अच्छी है कि आपने इसको देख करके आंसर कर दिया. Why I'm telling you? Wittiness or this tells you actually कि how smart you are. और ये एग्जाम हॉल में बहुत हेल्पफुल होता है. बिकॉज आपको एग्जाम में ये भी तो करना है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कुछ लिखा है उसमें से उठा के आंसर लिखना है, मार्क कराना है. A lot of things. You have to read it immediately and find out the answer and write it as the answer. ठीक है. तो बहुत सारी ऐसी चीज होती है आपको प्रायर नॉलेज नहीं होती, लेकिन वहीं पर पढ़ के वहीं पर फॉरन रिस्पॉन्स करना है ना. हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं. यस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी गुड थिंग दैट यू हैव गॉट दैट ना. यू हैव, मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया था फिर ये दिया था. मैं चाहता तो नहीं भी हाईलाइट करता, बट दैट इज द रीजन आई वांटेड टू नो whether someone will keep track on that or not, है ना. So G6 से G7 बना by addition of which? ठीक करते हो, पहले आप बिना पैसेज पढ़े आंसर ट्राई करो, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑफ कोर्स. यस, दिस इज द राइट अप्रोच. यस कृषि सर. G6 G7 वो तो डिस्कस कर लिए 76 में. बाय एडिशन ऑफ विच कंट्री? कौन से कंट्री को ऐड करने के बाद? प्लीज आंसर इट गाइस, थोड़ा पता होना चाहिए आपको. यस, I have got only one right answer. Yes, Krishi Sadeva, you're right. Canada is the right answer. Please the right answer to this question. तो आप देखोगे next year 1976 में Canada got added and G6 became actually G7. ठीक है? So B is the right answer to this question. ठीक है? In which year FATF was formed by G7? Financial Action Task Force. इसका आपने नाम सुना है? स्क्रीन फ्रोज हो गई. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये पूछता है कि which grouping has formed FATF? 1989. Very good. Yes, Krishi says they were right. He is the right answer, है ना. To combat terrorism financing, right? है ना, 1989 में. फिर ये अपना डिटेल नहीं जाना है. ये भी जान सकते हो 1992 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया था. ठीक है, बट हियर द राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर. ठीक है. फिर IMF and World Bank were added in 1996. ठीक है, फ्रांस में ऐड किया गया था 1996 G7 समिट में. मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF and WTO also started participating in this, UN etc. Then G7 became G8 by addition of dash in the year dash. ये बताओ कब हुआ? चले काम करते, मैं आपको दो होमवर्क देता हूँ. ठीक है, I will have one more class of G7 जब G7 समिट कंप्लीट हो जाएगी. So most likely next week में I'll have one more class where I'll discuss all about the G7 summit की क्या-क्या G7 summit में हुआ. ठीक है, होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि G7 G8 कब बना, by addition of which country and which year. ठीक है, then later on G8 again became G7. उस कंट्री का नाम बताना है, which was expelled and in which year and why. हाँ, कुछ लोगों ने आंसर लिखा है. ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा होमवर्क दे रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज G7 G8 कब बना, एडिशन ऑफ विच कंट्री, विच ईयर. फिर G8 later on again came back to G7. Why it was expelled, which year, what was the reason. ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद नीचे कमेंट में लिखना है. ठीक है, in the next week I will schedule one more class of G7 where I will discuss this in detail. और G7 summit जो हो चुका रहेगा उस वक्त, so I'll be having class for that. ठीक है, so this is the homework. Please write in the comments. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day. जो क्लास ओवर हो जाएगी, so स्टैटिक वीडियो मिलेगा, उसके नीचे कमेंट कीजिएगा.